इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप और एनी डिज़ाइनिंग टूल। तो आप इनको फ्रीलांसिंग के बेसिक स्किल्स सीखकर सॉफ्ट स्किल्स जो एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स आपको सिखाएंगे, तो आप इससे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देंगे। और वन मोर रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं, आप कोई एक स्किल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मेजॉरिटी होगी, तो लास्ट डे में हम आपको वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हैं। वो लाइव स्केचिंग हो सकती है या फिर कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे हो सकता है, या गेम की एसेट कैसे बनेगा। एनी क्वेश्चन? रेट्रो लोगोस की इसमें आए थे। रेट्रो लोगोस की काइंड्स में आ जाते हैं, जैसे सिग्नेचर्स या विंटेज वगैरह हो गए, लेकिन जो बेसिक्स होती हैं लेटर मार्क, वर्ड मार्क, सिंबॉलिक और आइकॉनिक, हम इनके बारे में आपको बताएंगे। फर्दर हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? समर के बारे में बताती चलूँ, ही वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट या सेकेंड Foreelancing cycle. He is, as you can see, he looks very young and he is very young. He's one of our youngest freelancers in Tech Hub Connect. But the way he has sort of picked up freelancing and graphic design is amazing. And for those of you who do use different portals, you can always speak to him and go check out his profile. And he's doing his own company. So, and he has great skills to sort of teach. He is already teaching a lot of info and So, thank you Samir and Faiza. अगर आप लोगों के पास कोई questions हैं, one last chance. Do you want to ask anything? Assalamu alaikum everyone, my name is Faiza. I wanted to add something, I forgot to put up one thing in this thing कि हम लोग जो workshop कर रहे हैं is basically 6 days long? 5 days. 5 days long. So the procedure of it will be the first day we will be giving you a lecture, like a kind of discussion in which we can talk about the basics of whatever is described or mentioned over here. And in future, like after the 4 days that are left, उसमें हम लोग इस तरह से करेंगे, we will have activities. We will give you definitely some kind of assignments or maybe something like that, so that you can come up with something and we can give you feedback on that. Maybe if you can definitely, if you guys can work with us, that will be very, very helpful. Faiza and Samir, can you also shed light a bit on the criteria of how will you be selecting candidates? Samir knows better about that because he will be working on application. Just quickly. सिलेक्शन के बेस में हमने जस्ट स्पेसिफिक नहीं किया कि जस्ट टूल के बारे में वो होनी चाहिए। अगर हम ऑलरेडी ये कहेंगे कि आपको डिज़ाइन के बारे में पता हो या एजुकेशन हो, तो फिर ये बेसिक ट्रेनिंग का कोई पर्पस नहीं होगा। जिसको भी एडोब इलस्ट्रेटर या एनी डिज़ाइनिंग टूल आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। Thank you Samir and Faiza. Next up we have iOS development, for which I'd like to call upon Mr. Fahad Azim and Mr. Junaid Butt on stage. Please clap. इनके बारे में बताती चलूँ, they've been a part of our space for a while now, and Fahad and Junaid have been two of our very supportive freelancers, always ready to sort of help us whenever it comes to giving workshops. They've also conducted trainings in our second cycle, and they wanted to do it again. So I think again big round of applause for them, because as freelancers they're pretty busy, but still they take out time for to teach more people. Go ahead, Fahad. सबसे पहले मैक ने बता ही दिया कि लास्ट साइकिल में भी हम लोग पढ़ा रहे थे और इस साइकिल में थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया चीज़ों को। iOS डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम शुरू कर रहे होंगे, पिछली दफ़ा हमने एक ऐप को लेके नहीं बनाया था, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐप के साथ चलें। आप लोगों को एक स्क्रैच से ऐप शुरू कर रहे हैं और एंड तक उसको बनाएं। इसके लिए हम फाइल मैनेजर शुरू कर रहे हैं। फाइल मैनेजर से हम स्टार्ट करेंगे। iOS डेवलपमेंट में हम देखेंगे व्हाट इज़ iOS क्या है, उसका इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें होंगी, लैंग्वेज की बेसिक चीज़ों में वो सारा कुछ फंक्शन राइटिंग किस तरीके से बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हम आएंगे। स्विफ्ट iOS की लैंग्वेज जो एप्पल यूज़ कर रहा है उस पर काम करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि लेआउट्स कैसे हम बनाते हैं, इसके अंदर व्यूज़ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, व्यूज़ की नेविगेशन के बारे में देखेंगे, और इन दी एंड हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक ऐप बनाई जा सके फुल फ्लैश फ्रॉम स्क्रैच। सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि iOS डेवलपमेंट के लिए मैकबुक होना ज़रूरी है।
तो उन लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी जिन लोगों के पास मैकबुक होगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस हमें 6 मंथ एक्सपीरियंस चाहिए और ताकि हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना ना पड़े। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिनके पास 6 मंथ का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो, उन लोगों की प्रेफरेंस कुछ ऐड करना चाहिए। ऐड पे इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि iOS डेवलपमेंट के लिए जो मैकबुक है वो कंपल्सरी है, बट फॉर दिस वर्कशॉप there are few ways to install Macintosh on Windows. So if you guys find time, then try to find a way how you can install Macintosh. This is also called as a Hackintosh for Windows. So if you guys can do that, I think most of you guys have Windows machine. Very few of them have Mac. So so if you guys can manage this thing on your Windows machine, that would be great. Any questions, anyone? All set? So this workshop, as they just sort of told you, थोड़ी सी इसके लिए experience required है. So for those of you who've been working in the industry, you guys are encouraged to apply. But nevertheless, अगर आप लोग कोई और even if you don't have any experience, you should still apply. And they can always, there will be interviews. And let's say अगर आपकी technical knowledge है, तो you can also be a part of it. कोई hard and fast वो नहीं है कि apply ना करो. एक्सपीरियंस हम लोगों ने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. सो जिनके पास अगर इफ़ यू आर गाइस फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स भी हैं, वो से आपकी मिल जाए. इवन के जिसको C++ या जावा या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, सो वो भी जो है ना इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. So next up we have web development. ये हम यहाँ पे बहुत मैंने short लिखा हुआ है because I want the trainers to sort of come in and explain where offering web development in Ruby on Rails and PHP development. Can I please have Mr. Hassan Sami on stage? Can you please explain what will you be teaching in Ruby on Rails? Assalamualaikum. First of all, I will be teaching PHP. Oh, okay. So there is another instructor who couldn't make it. So can you please tell us about PHP development? अच्छा, हम प्राइमरीली बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल से शुरू कर रहे होंगे. बिल्कुल कोर प्रोग्रामिंग स्किल, इसमें PHP इन्वॉल्व भी होगी. उसमें हम शुरू करेंगे कि सिंपल प्रोग्रामिंग जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है उसको पॉलिश करेंगे एक बार पहले दिन. ठीक है. उसके बाद हम वेब इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और हम रियल वर्ल्ड एक ऐप लेंगे जो कि हम शुरू से लेकर एंड तक बना रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप. और इस कोर्स के अंदर तकरीबन कोई 5 असाइनमेंट्स होंगी और 1 प्रोजेक्ट होगा. ठीक है जी. और बैठा मैंने इंस्ट्रक्शन में दिया था कि तकरीबन आपको 50 आवर्स उस वीक में देने पड़ेंगे इस वर्कशॉप को. 50 आवर्स, इसका मतलब है तकरीबन डेली आप 8 से 10 घंटे बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. So ये 2 weeks किस तरह से कि एक वीक में Ruby on Rails के ऊपर कोर्स होएगा और सेकंड वीक में PHP डेवलपमेंट में होएगा. So essentially those are going to be 5 days of your week जिसके अंदर 50 hours देने होंगे. So I don't think I don't know about you guys, but that's not a lot considering आप एक course आप उसको सीखना चाहते हो सिर्फ 5 दिनों के अंदर. So point being, I think the reason why Hassan has sort of clarified is कि it's going to be a hardcore course where we're going to make sure कि आप लोगों को समझ आ जाए and you're able to do it hands-on, because once you become a freelancer and you start taking projects from clients and start delivering them, you have to be really good at it. You can't just start without sort of having the expertise. So Hassan is going to ensure कि आप लोग अगर PHP development कर रहे हैं तो you are the best out there. So if you're ready to give 50 hours a week in this particular month of November from 7th till 18th of November, so make sure to apply. Any questions, anyone? प्रोग्रामिंग की बेसिक स्किल्स आनी चाहिए आपको.
किसी भी लैंग्वेज में, सी, जावा, कुछ भी, दैट्स इट, बिल्कुल बेसिक। और आप सीखने को तैयार हो नहीं, सिर्फ लेट्स से सी आती है या जावा आता है। फ्रंट एंड मैं तो बूटस्ट्रैप हो नहीं, फ्रंट एंड इंक्लूडेड नहीं होगा, मैं बैक एंड डील कर रहा हूँ ज़्यादा, फ्रंट एंड सिर्फ टच नहीं किया। हम कोर्स से शुरू करेंगे और फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन देंगे, लैरावेल और CI कोऑर्डिनेट। और हम इंश्योर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 दिनों के बाद आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लेने के काबिल हो जाएं। हसन के बारे में बताती चलूँ, he has been freelancing and right now I think my mic just stopped working, so I hope you can hear me. He now runs his own startup Verify and he is also one of our panelists, जो कि इसके बाद हमारी panel discussion होगी, and also he is going to start up Istanbul, right? Is that correct, Hassan? Yes. So he really knows his stuff. So do you if anybody does not have any questions, can we move on? Acha, he has a question. Laravel, आप कौन से वर्जन में पढ़ेंगे? 4 या 5? 5. Okay, like स्टार्ट से 5 में स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी, 5। एंड 10 आवर्स जो है आपने बताया है, ये मतलब 10 आवर्स डेली आपसे चाहिए। मैं हमारे या फिर आपके पास एक टाइम फ्रेम होगा? अच्छा, एक्चुअली अगर आप ये ले रहे हैं ना ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो पहले दिन मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा एक टूल जो कि आपके सिस्टम में आपकी ट्रैकिंग करेगा कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ और इतनी डेडिकेशन से दे रहा हूँ, फिर ये नहीं होगा कि अच्छा मैंने ये कर लिया हो। सर टूल का नाम? Is that all? नहीं जी, जहाँ में मर्जी करें आप। जी आप यहाँ भी कर सकते हैं। There's a co-working space on the 5th floor. You're most welcome. Thank you, Hassan. Can we have? Social media marketing. ये हमारे instructor, he had a project to deliver, so right now he's not here with us. Mr. Faisal Salim will be taking this training. It's a 1-week-long workshop जिसके अंदर I'm not sure if you guys know, but social media marketing के अंदर ही you can also start freelancing. So this one freelancer of TechHub Connect, he works with direct clients and all he does is give his services in social media marketing and different brands social media services देते हैं. So it's pretty simple where he will be telling about how necessary is social media marketing now, how important it has become for if you're starting a brand, तो उसके लिए कितना important है social media marketing को use करना. फिर आप big clients को किस तरह से लेके आ सकते हो through different portals like LinkedIn is better or direct clients, local clients are better. इसके बारे में he's going to run you through. And then how to send proposals. एक बहुत बड़ा element freelancing का होता है, which is कि आपकी you are sitting in a third world country or anywhere around the world, your written communication is very important, and proposal plays a very important part in how you get client, you sort of get a client on board. So he's going to be telling you about how to write proposals when, in particularly when you're offering social media marketing services. फिर उसके बाद B2B marketing किस तरह होती है, Facebook messages के through B2B marketing आप कैसे कर सकते हो, then how you can increase reach of your particular post. उसके अंदर एक element ये भी होगा कि Facebook now offers a lot of ways in which you can use Facebook to increase your reach.
तो उसके बारे में मैं कब ऐसी आसानी नहीं आ गई है, बंदा वो एब्सेंट है जिसके खुद मास्टर है। ट्रेनिंग और वर्कशॉप यू विल बी कम्प्लीटली, आपको पूरी तरह एक पूरा पैकेज सिखा दिया जाएगा। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको बहुत शौक है पूरा वक्त फेसबुक पे बैठने का, आई थिंक दिस इज द ट्रेनिंग फॉर यू एंड यू शुड अप्लाई। एंड आई थिंक इसके क्राइटेरिया के अंदर इतना मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई वुड से कि शुड अप्लाई टू दिस ट्रेनिंग बिकॉज इसका कोई एज क्राइटेरिया वो नहीं है, कोई देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस। सो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? नो, ये सारी रिकॉर्डिंग आप फेसबुक पे देख सकते हैं। Okay. So moving on, our module 6 is Android development. There is a lot that Shajil Afzal wants to sort of teach in this. So can I please have you on stage, Mr. Shajil? Assalamualaikum. I will be teaching Android app development. Sorry, I think like this is ज़्यादा points लिखे हुए, but the training material or content will be like in initial few for 2 days हम देखेंगे कि layout कैसे बनानी है, Android Studio को यूज़ कैसे करना है, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह। सेकंड में हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स UI कैसे बनाने हैं एंड्रॉयड में, ठीक है। फिर थर्ड डे में हम देखेंगे इसको क्लाउड स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। हम यूज़ करेंगे गूगल फायरबेस, जो कि रिसेंटली गूगल ने रिलीज़ किया है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रियल टाइम डेटाबेस बना सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट, यानी आप ऐप में ही अपना कोडिंग करते हैं और डाटा वगैरह सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम फायरबेस के डिफरेंट फीचर्स देखेंगे लाइक ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज और पुश नोटिफिकेशन, ऐप इनवाइट। एंड लास्ट टाइम भी मैं था सेकंड साइकिल में हमने ट्रेनिंग दी थी, बट इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक रियल ऐप बनाएं और इसको रिलीज़ करने की कोशिश करें विद इन 5 days। तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन। क्राइटेरिया बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज हम बनाएंगे जावा की और उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्किल जो है होना बहुत लाजमी है। और इसके अलावा अगर आपको ये है कि अगर आपको एंड्रॉयड का शौक है कि इसमें ऐप्स इस तरह से वर्क करते हैं, आप बनाना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। लास्ट टाइम भी यही इशू था कि जब अप्लाई कर रहे थे लोग तो बहुत ज़्यादा थे, मगर एक्चुअली अपीयर नहीं हो रहे थे। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये ट्रेनिंग फ्री है, बट तो अगर आप वाकई में कुछ लर्न करना चाहते हैं और आगे इसको एज ए स्किल यूज़ करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, वरना थैंक यू। Shajil has also taught in our second cycle and he is right. I feel it's also a bit sad. हम लोगों का थोड़ा सा ये मसला होता है जब एक फ्री होती है तो बड़ा for granted लेते हैं। So those of you who want to apply to this application to this particular workshop, please know कि this is a very technical sort of training. इसके लिए प्रीरेक्स भी इसलिए रखे गए हैं। सो इफ़ यू आर चोजन दैट इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज दैट ही सेड हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई थी लास्ट टाइम भी, बट आई थिंक एट द एंड ही चोज अबाउट 5। या इट वाज अ वेरी स्मॉल लॉट। अब उसमें अगर आप इतने लोगों का चांस मार के इफ़ यू आर गेटिंग द सॉर्ट ऑफ स्पॉट टू कम, so you should have the dedication because you are sort of taking away somebody else's spot. Actually, we had selected 20, but only 5 to 8 were clear. अच्छा। No, we will not using any web services because Firebase is itself a web service. We do not need any web service. जी, उसमें आपको अलग से वेब सर्विस नहीं बनानी पड़ती, आप ऐप के अंदर ही कोड करते हैं और एज इट इज डाटा प्लेस। जी बिल्कुल, रियल ऐप बनाएंगे उसमें नोट टेकिंग ऐप। जी नो प्रॉब्लम। अगर आपको C++ आती है, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में C++ होती है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्किल अगर आपके हैं, ओके स्किल अच्छे हैं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होती। कोर जावा यूज होती है जी, बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो होगा। आई थिंक आपको हेल्प कर जाएगा अगर आप पहले से W3 स्कूल से जावा का बेसिक कोर्स कर लो, सो आपको फिर फॉलो करने में आसानी होगी। एनी क्वेश्चंस? जी अप्लाई कैसे करते हैं? वी कैन अप्लाई अप्लाई मतलब कैसे अप्लाई करते की फॉर्म है उसके लिए अभी आई विल टेल यू कि किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? ओ वी हैव अ क्वेश्चन हियर एंड अ क्वेश्चन हियर। कंपाइलर लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करेंगे? यस, वी विल बी यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो एंड हम मिड लेवल नगेट तक के लिए सेंड करेंगे इसको? नगेट एंड्रॉइड नगेट तक यानी जो उसकी नई डिपेंडेंसी आई हो और पिछली जो रिमूव हुई है उनको साथ यूज करेंगे? जी, हम लेटेस्ट डिपेंडेंसी जो है वही यूज कर रहे होंगे, लेटेस्ट जो लाइब्रेरीज हैं वही यूज कर रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन। फायरबेस मैसेजिंग यूज करेंगे या जी, फायरबेस मैसेजिंग यूज कर और रहे हैं। इसके साथ अगर कोई हमने ऐप इंजन बना जैसे XMPP सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं चैट एप्लीकेशन के लिए जी, एक्चुअली उसके लिए PHP स्किल होना लाजमी है, मगर मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, उसके लिए सेपरेट से हम बना सकते हैं, मगर वो हम कवर नहीं करेंगे इसमें। टेकीज और कोई क्वेश्चन? चलें, ओह देयर इज वन। प्ले स्टोर का अकाउंट बैन हो जाए उसके बाद गया सीन प्ले स्टोर का अकाउंट बैन हो गया है, आप क्या कर सकते हैं? आप गूगल की तरफ से तो अगर बैन हो गया तो आपको बहुत मुश्किल होगी, रीजन बताओ। लेकिन बैन क्यों हुआ है? दैट्स द क्वेश्चन। स्पैमिंग। चलिए, थैंक यू शुजीत। तो यहाँ पे कितने लोगों को गेम्स खेलने का शौक है? कितने लोगों को गेम्स बनाने का शौक है? क्या फायदा कि खेलते बनाते नहीं? So I would like to call on stage Mr. Uwais Zahir, who is going to be giving a workshop on game and Unity 3D development. Can we please have you on stage? हीटर बोल रहे हैं अच्छा खासा। नहीं नहीं अभी सबकी दिखाते हैं। Achha, I think he is not here, and I don't think I'm the best person to sort of tell you what he's going to be teaching. But anyway, जो उन्होंने लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ. So you should have game development की knowledge होनी चाहिए. Again, iOS and iOS की pre-rec की तरह थोड़ा सा experience हो तो इसमें zoom का feature भी होना चाहिए. Again, it's a one week thing. तो उसके अंदर अगर आप बिल्कुल अभी शुरू करें थोड़ा सा मुश्किल होगा. नहीं पड़ता भाई, ये नोट 7 थोड़ी है। और गेम डेवलपमेंट सिखाना. S7 C# आनी चाहिए. अगर आपने उसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, कोई कोड्स लिखे हैं, एल्गोरिथम है, दैट विल बी अ प्लस. Menus, you should be able to create, yeah, they'll be teaching how to create menus, levels and loading screens, and UI canvas and event system specially इसके अंदर यूज करेंगे. How to use binary IO to encrypt and save your game, उसके बारे में सिखाया जाएगा. फिर in-app purchases आप कैसे and self virtual currency किस तरह से कर सकते हैं. आपने अगर खेली है games उसके अंदर एक currency system होता है, you get certain number of you get it right, आपको currency के थ्रू आप certain चीजें खरीद सकते हैं. So वो functionality कैसे अपने गेम में डाल सकते हैं उसके बारे में बताएंगे. फिर social media integration कैसे करनी है अपनी गेम के साथ, उसके बारे में भी कवर किया जाएगा इसके अंदर. वीडियो और इंटरस्टिशियल एड्स, जिससे एडमॉन एंड यूनिटी एड्स, इसके अंदर अनलॉक कैसे कर सकते हैं गेम्स के अंदर डिफरेंट आइटम्स को, और वो वाली फंक्शनैलिटी कैसे डाल सकते हैं. सो एज यू कैन सी एवरीथिंग अबाउट अ गेम आपको एक हफ्ते के अंदर सिखाया जा सकता है, कंसिडरिंग यू हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन गेम डेवलपमेंट बिफोरहैंड. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? I'm glad because I wouldn't have been able to answer them. So last of our workshop would be on project management. Project management एक ऐसा it's a very essential part of freelancing. Some of it will also be covered in आपकी soft skills.
बट दिस विल बी अ डेडिकेटेड 1 वीक जिसके अंदर आपको बिडिंग डिस्कस करनी है, projects, a lot of freelancers in our co-working space, even हमारे co-working space में हमने different categories बनाई हैं. So there's one category of particularly project managers. वो लोग क्या करते हैं, they just bid for projects and वो bid करके और लोगों को like और freelancers को outsource करते हैं. So if you plan to become one of those, you should be applying for this workshop. जिसके अंदर जहांगीर शिबी, he's not here today, but he is one of the best freelancers we have in Tech Hub Connect right now, who is currently doing this, and he takes all kinds of projects. सिर्फ उनके पास डिफरेंट लोग हैं जो कि अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, and he just gets work done from them, and उनका मॉडल इस तरह से कि he pays them directly, वो अपना कोई कट नहीं है. So at the end what's happening is कि if you're a freelancer on a particular website, तो आपकी रेपुटेशन बेहतर हो रही है. बेशक आप उसको खुद नहीं कर रहे, उसके पैसे नहीं ले रहे, लेकिन जब आपकी रेपुटेशन बेहतर होती है तो ऑटोमेटिकली आपका एसईओ भी बेहतर हो जाता है, एंड क्लाइंट्स आपकी सॉर्ट ऑफ रिलायबिलिटी बढ़ती जाती है उनको. सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? जी. What is the criteria of selection of the applicants regarding this domain? इसके अंदर आपको बेसिकली थोड़ी सी कम्युनिकेशन लैंग्वेज, रिटन कम्युनिकेशन लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा इसके अंदर राइटिंग है. सो दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ओके इफ यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट, क्योंकि इसके अंदर बाकी वो सारी फ्रेश ग्रेजुएट इन द सेंस कि फ्रेश इन फ्रीलांसिंग, कोई इतना हार्ड बहुत मुश्किल क्राइटेरिया या एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है. एंड यू मस्ट हैव अ प्रोफाइल ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है. Any other questions? Yes. So how to apply? अभी यहाँ किसी ने पूछा भी था. Right now हमारी वेबसाइट है techhubconnect.pitb.gov.pk. अगर आप वहाँ पर जाओ या इवन सोशल मीडिया, वहाँ पर हम इसके बारे में like we put the link up there. Right now the application is live. On our website, when you go, एक स्लाइडर चल रहा है, you can either click on this particular slider, या ऊपर if you can see the red rectangular box, Foreelancing का एक टैब है, just click on it. जब आप वहाँ पर जाओगे, so whatever you saw on the slides, वो in detail वहाँ पर लिखा हुआ है. You can have a look at the course and उसका curriculum क्या है, and you can, और नीचे भी उसके होगा कि click here to apply. अब इसके अंदर ये जैसा मैंने बोला, इट्स अ 10 week long, so it is a long, for us it's a long workshop, but for you it may or may not be. आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप हर सारी स्किल्स को लो. आप एक जिस पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्टेड हो, you can apply till 26th of September.